मुसलमान मुल्कों में और गैर मुसलमान बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग राइज की जा रही है। इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो। और जाहिर है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर काम करेंगे तो बरकत तो अल्लाह ताला दे ही देगा। मैं बैंकर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि इसको प्रोफेशन के बजाय एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड सर्विस समझें। मैं तहे दिल से तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा शब्बीर मैशमी साहब, मदर अब्बास साहब, अल-सादिक इंस्टीट्यूट के तीसरे अहबाब। A great moment, a great launch. Inshallah Ta'ala, we'll have a very pleasant short ceremony. अल-सादिक इंस्टीट्यूट तकरीबन 2007 से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए और ख़ास तौर पर यूथ में और प्रोफेशनल्स में अवेयरनेस, इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, तकाफुल के हवाले से काम कर रहा है। 16 साल का ये अरसा कि जिसमें असल मिशन ये था और है कि लोगों को इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस और तकाफुल के हवाले से तरबियत की जाए। मुसलमान मुल्कों में और गैर मुसलमान बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग राइज की जा रही है। इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑल्सो। और जाहिर है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर काम करेंगे तो बरकत तो अल्लाह ताला दे ही देगा। मैं बैंकर हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि इसको प्रोफेशन के बजाय एक आइडियोलॉजिकल सर्विस समझें।
alaikum. Am I audible? So do we begin our session? Or we wait for participants? What do you say? Okay. That's good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning, afternoon to all those people who are joining us around the globe and to everyone joining us today. I am Madiha Rubab, a proud member of the Executive Committee of Al-Sadiq, Institute of Islamic Banking, Finance and Takaful. I'm also a professional banker. It is my utmost pleasure to welcome you all today to this very thought-provoking and prompt and very insightful webinar. Let's begin with the introduction of the speaker. I'm also deeply impressed, honestly. We are deeply honored to be joined by Mr. Faisal Sarwar, Deputy Director at Central Bank. Mr. Sarwar is a seasoned professional with a strong commitment to knowledge sharing. He has provided voluntary consultancy services to financial institutions and has delivered extensive corporate trainings in the field of finance and economics. He currently serves as a visiting lecturer at several prestigious institutions, including Sindh Madrasatul Islam, Salim Habib University, Indus University, and Bahria University. Academically, he holds an MS in economics and an MBA in finance from IOBM and a BCIT from NED University. He is also a certified trainer under the International Finance Corporation's Train the Trainers program. His areas of expertise include treasury, risk management, finance, accounting, economics, and entrepreneurship. He has delivered international training on behalf of IBEXEC USA, covering topics such as reserve management and the changing banking climate. We are truly privileged to benefit from his vast experience and knowledge today. Without further delay, let's begin. Mr. Faisal Sarwar, over to you, sir. Assalamu alaikum ji. All of you can hear me? Walaikum assalam, sir. It's easy to, everyone is hearing. And should I start my presentation about the training, about the topic? Yes, please, sir. Continue. Okay. Yeah, all of you, I hope you are all fine. So today's topic I have been presenting, that is fixed income and the equity market. Both are the different topics. They are part of the capital market. So we will go through in the detail in a 1 hour session. The presentation, my presentation will cover what is capital market. Then we go through in the bond, fixed income, futures market, and then I will tell you about what is the method of the valuation for the bonds and the stock market features and characteristics and the valuation of the method. We will discuss about the equity different methods. So one thing I want to add up in the starting, that if you have any question, raise your hand, ask anytime. Even we will take a discussion topic at the end of the session.
So you have any query, any questions, anytime you may ask. Anytime. So before we start about the fixed income and the capital market or the equity market, we have to know one thing before we start that. That is an economic cycle. Economic cycle covers two different entities. One is called the lenders and another is the called borrowers. अगर ये lenders and borrowers में interaction होगा, then it's possibility economy is moving efficient. If we have a more lenders, less borrowers, then it means high liquidity and no one is the market the buyers. And if there is a so many borrowers and lenders or limited lenders, it means the market is illiquid, market is tight. So maybe you heard about the contractionary or something like that policy. Yes. So because of that, borrowers and lenders connect करने के लिए we need a financial intermediary. And that financial intermediaries are mostly banks, asset management companies, we have real estate agents, we have brokerage houses. Go back to the 90s when they were individuals or a corporate or a public, the borrowers and lenders, they were connecting through a banking channel. There was one asset side that was known as a loan possibility. अगर किसी के पास पैसों की जरूरत है वो लोन लेता था and who have the maximum money the lenders who deposit करता था तो connection between them. But there was a one problem between the lenders and the borrowers. Why? That is the gap between whoever lending the money, depositing the money, they are mostly a short term. And whoever borrowing the money, they are mostly a long term. So because of that mismatch and the gap की वजह से क्या हो रहा था liquidities में problem आ रहा था bankruptcy भी होती थी and so many issues at that time. So because of that 90s में फिर एक नई चीज start की गई that we have to bring something alternative of that market, a private equity or loan. उसके लिए हम कोई एक alternative market बनाए. That market should have a secondary market in where they can buy, they can sell anytime. So for that purpose, so फिर हमारे पास एक financial market आई, which have a secondary market, जिसमें we have a stock exchange market, we have a money market, we have a bond market, REITs market. So वो क्या है कि anytime you have to sell or buy, so liquidity crunch का problem नहीं आएगा because that market have a maximum secondary market. So what we call it a secondary market, the secondary market have transferable, tradable, and they have a liquid market. So इसके लिए हमारे पास ये फाइनेंशियल मार्केट. अब क्या होता है इस लैंडिंग साइकिल की इस पूरी साइकिल के ऊपर दुनिया भर में हर कंट्री के हिसाब से एक अपना सेंट्रल बैंक हो रहा है. तो क्यों हो रहा है देखें स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट ये जब भी हो रही होती है दैट इज एक्चुअली इन देयर ओन लोकल करेंसी. दैट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो इस लोकल करेंसी को हमें सिस्टम को चलाना है. सो इस पूरे सिस्टम को देखना है कि इज इट द सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपर्ली, इक्विलिब्रियमली. तो सेंट्रल बैंक इज द रेगुलेटर ऑफ दिस मार्केट एज अ बैंकिंग साइड. सो ही हैज टू लुक आफ्टर. तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, मार्केट प्रॉपर्ली काम कर रही है उसको. सो वो उसको देखते हुए whatever they needs, जो tools होते हैं monetary policy के, they have to implement accordingly, and that is move on, and the systems goes on and goes on. So that is the main. तो हम इसी financial market के दो market को we have going to discuss that. One is the bond market and another is the stock exchange market. So because they have a secondary market. So what is a capital market? Capital market actually a financial market where long-term debt and equity security are bought and sold. तो इसमें एक चीज तो क्लियर होगी, कैपिटल मार्केट जो यूज होती है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो उसमें या तो बॉन्ड्स हो सकते हैं एंड द शेयर्स हो सकते हैं.
मनी मार्केट जब हम बात करते हैं दैट यूज फॉर अ शॉर्ट टर्म। सो पहली चीज तो वहां पे इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल दैट सिस्टम दैट चैनल्स सेविंग एंड द इन्वेस्टमेंट को लिंक कर रहा हूं। who is the actually the part of this? So who is the part? The supplier of the capital, that is a investor. User of the capital is a business, government, जो भी इनको पैसों की जरूरत है, they are the borrowed actually from them. मेन पर्पस क्यों यूज करते हैं कैपिटल मार्केट? फॉर द लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, एंड द लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए व्हाई वी नीड बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जिसपे प्रॉफिट बाद में आता है, उसके कंप्लीशन होने में इट नीड्स अ ह्यूज टाइम फॉर दैट पर्पस वी गो फॉर दैट। इफ वी नीड working capital or a short-term debts payment. So for that purpose, they go for a working capital or money market funds. So capital market, we have a primary and secondary market. Primary market में we have the private placement or the हम जब shares की बात करते हैं तो we have a public offering. Similarly, bonds में भी public offering होती है bonds के लिए और market के लिए launch होती है। Secondary market क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज सेक्शन पे हो रहा होता है जिसमें या तो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा होता है या उनकी सेकेंडरी मार्केट होती है दैट वी कॉल इट ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट, दे वर्क टुगेदर। सो दैट इज इवन वी हैव एन अनऑर्गेनाइजेशन सेक्शन भी हो रहा होता है जो कैपिटल मार्केट को देख रहा होता है। हम ज्यादातर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। When we go for the capital market, we have the equity based instrument जिसमें हम दो चीजों को देख रहे होते हैं, स्टॉक्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स। स्टॉक्स जिसमें कॉमन स्टॉक्स होते हैं, जिसमें दे हैव वोटिंग राइट्स होते हैं, इसमें ये वो शेयर्स होते हैं जो ट्रेडेबल हो रहे होते हैं मार्केट। प्रेफर्ड की बात करते हैं तो प्रेफर्ड आर दोस शेयर that are not tradable. They don't have the voting right. They have been given the preference for this. So for that purpose, then we have a debt based instrument. Then we got a bonds. जब हम bonds की बात करते हैं, it means a secure bond, collateral based bond. अगर वहां पे we are discussing about that at debentures, it means that these bonds are unsecured. Unsecured, उसके against में we don't have a collateral. We have the derivative markets in there. We do a future market in the stock market and the bonds market. We have options in that market. We have the swaps in the market, that is the interest rate swaps. उसमें भी ये capital market में use होता है. Even we have the fourth last market, that is a hybrid instrument. They have been given the option to change from one instrument to the second instrument. We call it a convertible bonds and the preferred stocks. Preferred to change in the common stock. Convertible bonds mean convert to the common share. So we have these type of a different market. पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? हमने वी हैव डिस्कस इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो बाय एंड सेल करते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जा रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जिनको ये कैपिटल रेज करने के लिए यूज किया जाता है टू रेज द कैपिटल। रेगुलेटर वी हैव डिस्कस अबाउट दैट, द स्टेट बैंक इज रेगुलेटर अबाउट दैट। तो वी देखा अगर एससीसीपी है तो उनको रेगुलेटर, तो दे हैव टू बी अ रेगुलेटर। एंड देन वी हैव टू बी अ फाइनेंशियल एनालिस्ट जो इन कंपनीज की फाइनेंशियल रेशियोज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस किया जाता है टू चेक इट आउट व्हाट आर द ट्रेंड्स इज गोइंग टू बी हैपन फॉर द पर्पस ऑफ स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, उनके बिहाफ पे उनको रिकमेंडेशन। So why that is a capital market is more important for the economical development? Because एक जो इस वक्त अगर आपने देखा होगा, we in the Pakistan is using a week of a financial literacy program. We don't have that much a saving and investment ratio. Literally in the Pakistan market, we have a more than 90% consumption based economy. We don't have the saving concept. Major, agar we discuss about the Pakistan market, we don't have. Therefore, if you ask from anyone about the investment, they don't have an idea about where to invest. They don't know about where to invest in the share market, where to invest in the bond market.
Rarely you find out the people who do in the investment side because we don't save money. We always, as we have a younger population more, but we always do a consumption base. 90% of the GDP ratio, more than 90% GDP ratio is comprised of the consumption. Second, the role of capital market facilitating mobilization of the resources. जिनके पास पैसा ज्यादा है उनसे जा रहा है उनके पास दो नीड द फंड्स फॉर दैट तो वो अपने क्या करेंगे दे हैव टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्शन एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी एंड द सिस्टम मूव्स ऑन थर्ड इनहांस लिक्विडिटी एंड मार्केट एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ दैट आपके पास मार्केट में लिक्विडिटी आती है एफिशिएंसी आती है एंड वी नो वी डिस्कस अबाउट द सपोर्ट अबाउट द गवर्नेंस एंड द ट्रांसपेरेंसीज वी प्रोवाइड टू मूविंग फॉरवर्ड जो हमारी कैपिटल मार्केट का जो पहला टॉपिक है दैट इज द फिक्स इनकम मार्केट तो फिक्स इनकम मार्केट को हम बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं फिक्स इनकम भी कहते हैं तो मे बी यू हैव सीन दैट म्यूचुअल फंड so they have a income fund bond fund so actually they are working on the long term bonds market में जब investment करते हैं so they are focusing on that. So fixed income market is where the investor buys security that provide a fixed periodic return that is known as coupon rate or the interest payment. जिसमें एक फिक्स टाइप की इंटरेस्ट पेमेंट होती है फॉर द टाइम बीइंग एक पीरियड के लिए अगर वो फ्लोटिंग रेट से प्रोवाइड एक 6 महीने के लिए फिक्स हो जाता है तो वहां पे आपका एक इंटरेस्ट जो है दैट इज फिक्स फॉर दैट पर्पस मेन इंस्ट्रूमेंट जो इस वक्त हमारे पास है वी हैव अ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वी हैव अ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वी हैव म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज हैं एंड सो मेनी वी विल डिस्कस ऑन दैट कि कौन कौन से इस वक्त मेन जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं की फीचर्स जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं फिक्स इनकम की तो नंबर वन इज अ predictable income because we know how much the yield till maturity we will earn how much the coupon payments we will earn in the particular time period ये हमारे पास एक चीज की इंफॉर्मेशन होती है सेकंड we know about the maturity date when we will get back our principal is repaid तीसरा जो फिक्स इनकम में सबसे फायदेमंद है दैट इज द लोअर रिस्क कंपेयर टू इक्विटीज मार्केट बिकॉज इट्स नॉट दैट मच रिस्क अगर हम रिस्की में भी जाएं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर लो रिस्की और वी कॉल इट रिस्क फ्री somehow the corporate bond is somehow risky but not that much risky as compared to the equities one then prices are sensitive हाँ bonds में अच्छा एक चीज आई वांट टू क्लियर है जब भी we say about the risk free it doesn't mean all the risk free का जो सबसे easy मतलब है that is a no default chances no credit risk we discuss only about the credit risk not all this but interest rate में change आने की वजह से we may face the market risk so price may increase price may decrease according to the so we जो हमारी प्राइस होती है बॉन्ड की दैट इज सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट कौन इन्वेस्ट करता है बॉन्ड्स में ज्यादातर रिस्क अवर्स कौन होते हैं जो रिस्क को कम से कम देखना चाहते हैं दे आर प्रोटेक्टेड दे डोंट वांट टू लूज द मनी देयरफॉर इफ दे आर रिस्क अवर्स सो दे जनरेट अ lesser profit so first उनका ये ज्यादातर फोकस Then we have an insurance company and the pension fund. So these people invest in there. So after 60 years, हमारे पास कुछ पैसा हो जिससे हमारा घर चले. इंश्योरेंस वाले भी इसी में होता है कि हम we have to pay the premium so that कि वो करें. तो वो भी ज्यादातर इन्हीं बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं कि खुदा ना खासा एकदम प्रीमियम की कॉल आ जाती है. So we have that much money and liquid market में होना चाहिए. तीसरा पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो अपने डाइवर्सिफाई करते हैं जैसे कीप द मनी ऑन द डिफरेंट एंटिटीज वो भी प्रेफर करते हैं तो बॉन्ड के फीचर्स की जब हम बात करें तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में उस फीचर्स में जा रहा हूं जो ग्लोबली यूज होते हैं सो यू मस्ट नो अबाउट दैट कि ग्लोबली क्या हो रहे हैं पाकिस्तान में क्या आ रहा है
वो भी हमारे पास हो। तो वी हैव अ डिफरेंट जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉन्ड्स होते हैं। नंबर वन इज अ टाइप ऑफ इशू। कौन कौन इशू करता है बॉन्ड, इसको मैं डिटेल में जाऊंगा। क्रेडिट क्वालिटी, रेटिंग एजेंसीज, मैच्योरिटीज, कुछ बॉन्ड्स होते हैं शॉर्ट टर्म मैच्योर, कुछ होते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स, वाटर कूपन्स। कूपन्स किस किस टाइप के डिफरेंट होते हैं? वी ओनली नो अबाउट द फिक्स एंड द फ्लोटिंग, बट देयर आर सो मेनी अदर्स। करेंसी, किस करेंसी में बॉन्ड इशू हो सकता है, किस ज्योग्राफी में हो सकता है, इंडेक्सिंग किससे रिलेट, किससे लिंक किया जा सकता है, एंड द टैक्सेबल स्टेटस, कौन से बॉन्ड्स पे वी हैव टू पे द टैक्स ऑन दैट कैपिटल गेन एंड कुछ पे हम टैक्स नहीं पे। नंबर वन इश्यूर कौन कौन हो सकता है? हाउस होल्ड हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें आ सकती है। अब इसमें थोड़ा सा अब आगे जाए, इसमें डिटेल में जाऊंगा कि कौन कौन है। पहले नंबर पे जो बॉन्ड्स आते हैं दैट जो दुनिया भर में मशहूर होते हैं, वी कॉल इट अ सॉवरेन बॉन्ड्स, सॉवरेन नेशनल। ये हर कंट्री अपनी लोकल करेंसी में नो बॉन्ड्स इशू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल। इसका एक पर्टिकुलर ऑप्शन होता है और उसको, इन बॉन्ड्स को हम ज्यादातर जो सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं फॉर द लोकल मार्केट के लिए, दैट दीज बॉन्ड्स आर risk free. So people prefer to invest on these bonds if, because government is not going to be default, they can print them. Thirdly, जो recent bond issue हुआ होता है, जिसका recent bond का ऑप्शन हुआ होता है, we call it on the run, और उसका benchmark हम कहते हैं कि हमारे जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है वहां पे उसके लिए बेंचमार्क क्या है, इससे हम लोग। तो सॉवरेन बॉन्ड फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, इंडेक्स भी होता है। प्राइम एग्जांपल मैंने इसमें दी हुई है ट्रेजरी बॉन्ड ऑफ यूएसए, कि आजकल बिहार maybe you heard about the US tariff war, where US bonds की 10 years bond yield is increasing because of that। तो वो भी एक होता है कि इसमें बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। That is during the, whenever the economies are moving toward recession or something like that, at that time it's a good time to be a investing in bonds। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास जिसका बॉन्ड का नाम है दैट इज नोन एज पीआईबी, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। ये 2000 में इसका नाम रिप्लेस हुआ था। पाकिस्तान में 3 years, 5 years, 10 years, 20 years, इवन वी हैव अ 3 years, 7 years भी है, 30 years के भी मैच्योरिटी के बॉन्ड है। बॉन्ड्स जो है मोस्टली सोल्ड होते हैं प्राइमरी डीलर्स के, तो और उसको ऑप्शन हो रहा होता है। इसमें ऑप्शन के लिए एसबीबी अनाउंस करता है डेट एंड टारगेट अमाउंट एंड कूपन रेट्स, वो सारा कुछ उसमें दिया। पीआईबीज जो है वो स्क्रिप्टलेस है, विदाउट एनी फिजिकल फॉर्म, एंड इवन दीज बॉन्ड्स को एलिजिबल हैं हमारी रिजर्व रिक्वायरमेंट में, जो मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ रिक्वायरमेंट है, एसएलआर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, उसमें 15% ऑफ द एसेट इस आप रख सकते हैं। दूसरे हमारे बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, दे आर नोन एज इस्लामिक बॉन्ड है, इजारा सुकूक, वो भी 2009 2008 से दैट हैज बीन इशूड। ज्यादातर हमारे पास भी हैव 3 years बॉन्ड्स होते हैं। इसका भी एक ऑप्शन आ रहा होता है, एवरीथिंग वो प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो सुकूक से लिंक्ड होता है 6 month से, तो उसके बिहाफ पे। अच्छा, इसमें सुकूक में एक चीज और भी होती है कि आप रिडेम्पशन भी कर सकते हो टाइम भी, तो उसमें आपका जो भी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसी हिसाब से ही आपको उसकी रिटर्न का पार्ट बनेगा, प्रॉफिट का पार्ट। दूसरे नंबर पे जो हमारे दुनिया के बॉन्ड्स है दैट इज नोन एज द नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड। नॉन सॉवरेन का मतलब है हैवंट बीन इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अगर मैं पाकिस्तान का एग्जांपल दूं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इशू किया है तो उसको भी हम पार्ट ऑफ नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट्स का पार्ट कहते हैं, वो भी रिस्क। उसमें क्या होता है कि मोस्टली अगर कोई हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, कोई जैसे कि रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, तो वो प्रोविंस जो है वो उसके अगेंस्ट में पैसे बोरो कर रहा है, एंड देन दे विल दैट बॉन्ड हैज बीन इशूड फॉर दैट पर्पस। तीसरा होता है एजेंसीज या कॉस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड।
फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, दे आर इशूइंग द बॉन्ड, जैसे पीआई हो गई, मोपटा हो गया, ओजीडीसीएल हो गया। अगर ये कंपनीज जो गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं एंड दे आर लॉन्चिंग द बॉन्ड्स, उसमें एजेंसीज का हम नाम। चौथा जो इस वक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉन्ड है, जो अभी कुछ अरसे में भी आई थिंक सो पाकिस्तान का भी पार्ट बन जाएगा, दैट इज नोन एज सुप्रा नेशनल। सुप्रा नेशनल जो है वो सुप्रा नेशनल एजेंसीज जो है वो इशू कर रही होती हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज, एंड दे हैव मोर रैंकिंग देन द एनी कंट्री बिकॉज दे आर अपर साइड। तो एग्जांपल जो है हमारे पास आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, दीज आर द मेजर कंट्रीज हैं जिसकी जो है उनके जो आपके पास है वो सुप्रा नेशनल। तो सुप्रा नेशनल इशू होते हैं, इसमें हाई क्रेडिट रेटिंग्स, आपकी क्वालिटी को देखा जाता है सुप्रा नेशनल। Then we call it a corporate bond. Corporate bonds जो होते हैं issued by the private sector. They can be issued in the both fixed and floating, and they have a different payments हो रही होती है। पाकिस्तान में corporate bonds को नाम दिया जाता है TFC, term finance certificate. They have the same type of 3 to 5 10 years life होती है, and they can be listed on the stock market, और ये आपके पास चल रहे हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें, तो हमने गवर्नमेंट बॉन्ड बात की जिसको हमने नाम दिया पीआईबी, कॉर्पोरेट बॉन्ड को टीएफसी कहा जाता है। कमर्शियल बॉन्ड्स, कमर्शियल बॉन्ड अगर आपने हर्ट किया वो एंग्रो रुपया आया था, या और भी के का आया था, सुकू का आया था, देवर एक्चुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सॉरी, देवर नोन एज अ कमर्शियल बॉन्ड। इसके अलावा दो जो है जो जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वन इज कॉल्ड यूरो बॉन्ड एंड यूरो कमर्शियल। यूरो बॉन्ड जब हम लॉन्च करते हैं तो उसमें प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज होती है। यूरो कमर्शियल बॉन्ड का मतलब है कि वी आर गिविंग द फेवर टू द पाकिस्तान यंग जनरेशन इन्वॉल्व, या पाकिस्तान ओवरसीज जो है उनको फेवर देना, फॉर दैट पर्पस उसको यूज करते हैं, तो वो ज्यादा। सो वो हमारा यूरो कमर्शियल। यूरो बॉन्ड में दो क्या है, पहले तो ये वन थिंग यू हैव टू क्लियर इट, यूरो डजंट मीन अ यूरो करेंसी, यूरो मीन एक्चुअली अ फॉरेन बॉन्ड। ठीक है, यूरो बॉन्ड के लिए लॉन्चिंग के लिए तीन में से दो रूल्स यू हैव टू होता है कि ये ना तो आपकी लोकल करेंसी में इशू हो और ना ही आपके पास हो, इसके लिए कोई और अंडर राइट हो जो थर्ड पार्टी। ठीक है जी, तो उसमें थर्ड आपके पास, तो इसमें क्या होता है कि कंट्री भी बाहर का हो जिस करेंसी में, और वहाँ के ही लोग हो उसमें, तो इस वजह से इसको यूरो बॉन्ड, कहीं पे इसको ग्लोबल बॉन्ड का भी नाम दिया गया। फॉरेन बॉन्ड में जैसे मैंने दो एग्जांपल्स डाले हैं कि बॉन्ड इशूड बाय फॉरेन फर्म्स दैट ट्रेड इन चाइना। अमेरिका ने अगर वो बॉन्ड इशू किया है जिस पे यॉन मिले, और यॉन के लोगों को लिए उसको दुनिया में कहा जाता है पांडा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें कि यूएसए ने आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट ने कोई बॉन्ड इशू किया है और वो जापान में किया है, उसको जापान की करेंसी में करना है, तो फिर उसको यंकी बॉन्ड का नाम दिया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चल रहा है वो है क्रेडिट क्वालिटी। अब हमारे पास वी हैव अ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ एन एजेंसी, वन इज स्टैंडर्ड पुअर, अनदर इज मूडीज, एंड थर्ड वन फिच। इस रेटिंग एजेंसीज को दो हिस्सों में ब्रेकअप किया, वन इज फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रेड, अनदर इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव ग्रेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो है वो डबल बी प्लस तक चलती है, उससे नीचे जो भी होती है उसको हम स्पेकुलेटिव ग्रेड का पार्ट बना रहे हैं, तो वो वहां पे आ रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, फिश ने चाइना की रेटिंग एजेंसी को कम किया हुआ है, ऐसे ही हमने सुना है पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसी को बढ़ाया गया। अगर समथिंग लाइक हैपनिंग, तो वो उसमें क्या होता है, बॉन्ड में क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आती है अगर क्रेडिट क्वालिटी बढ़े। तीसरा जो है वो दैट इज नोन एज मैच्योरिटी।
अगर किसी बॉन्ड में मैच्योरिटी नहीं है, वी कॉल इट अ परपेचुअली बॉन्ड्स, तो इट रिमेन फॉर एवर। ज्यादातर बॉन्ड्स जो होते हैं वो 3 साल 5 साल के लिए इशू होते हैं, एंड अगर उससे कम है, 1 साल से कम है, तो उसको हम मनी मार्केट सिक्योरिटीज का नाम दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की अगर हमें बात करें कूपन की, तो मैंने बात की थी वी हैव फिक्स कूपन भी होता है, फ्लोटिंग कूपन भी होता है, और जीरो बॉन्ड्स भी होता है कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अभी डिस्काउंट भी शुरू। तो इसके अलावा वेरिएबल कूपन होता है, डेफर्ड कूपन होता है कि मैं 5 महीने आपको प्रॉफिट नहीं दे पा रहा, छठे महीने से आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फंड्स, तो दैट इज नोन एज अ डेफर्ड कूपन। इस टाइप ऑफ कूपन भी होता है कि शुरू में कम हो, बाद में बढ़ता जाए, तो इट्स ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द कूपन स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप। देन करेंसी, ज्योग्राफी, अगर आप ड्यूल करेंसी में इशू करना चाह रहे हो, तो पाकिस्तान में भी हो और चाइनीज में हो, तो दैट नोन एज ए ड्यूल करेंसी। अगर आप किसी एक ही करेंसी में करना चाह रहे हो, तो आपको पास किसी करेंसी का है और वो आपको करेंसी ऑप्शन। ज्योग्राफी की बात करें तो दुनिया को 3 हिस्सों में बंद किया गया है, ब्रेकअप किया। वन इज कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, एंड इज कॉल्ड इमर्जिंग, और थर्ड इज द फ्रंटियर मार्केट। डेवलप मार्केट जो है वो दुनिया की वो वाहिद जो मार्केट है जिनका एचडीआई हाई होता है और उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, उधर ग्रोथ भी हो रही होती है और डेवलपमेंट भी हो रही होती है, तो फॉर दैट पर्पज उन कंट्रीज को हम डेवलप मार्केट का नाम दे रहे हैं। इंडेक्सिंग, अगर आप किसी से बॉन्ड्स को लिंक कर दें, तो उसको हम इंडेक्सिंग का नाम दे रहे हैं। कुछ में टैक्स स्टेटस बॉन्ड्स होते हैं जिसमें टैक्स को देखा जाता है, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, टैक्स से बचाया जाता है, तो वो भी बॉन्ड्स आपके पास। पार वैल्यू, बॉन्ड्स की हमेशा जो पार वैल्यू होती है या फेस वैल्यू होती है, दैट इज 1000। इसको हम यूज करते हैं फेस वैल्यू या मेच्योरिटी वैल्यू भी कह सकते हैं। और बॉन्ड दैट इज सेलिंग मोर देन इट्स पार वैल्यू इज सेड टू बी अ प्रीमियम बॉन्ड, और हमने बात की थी वाइस वर्सा डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है। अगर कूपन रेट ही कम है टाइम से यील्ड टू मैच्योरिटी से, इट शोज कि यील्ड टू मैच्योरिटी का इसका तो नहीं हो रहा, और प्रीमियम पे बॉन्ड ट्रेड करेगा। अगर ये रिवर्स है तो फिर ये जो है डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा, अगर दोनों सेम है तो फिर वो और दे आर ऑन सेम पाथ। तो बॉन्ड की टर्मिनोलॉजी पे हम थोड़ी सी डिस्कस करें, तो वी हैव अ 5 वेरिएबल इन द बॉन्ड। नंबर 1 जो बॉन्ड की टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, दैट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट अगर गिवन नहीं होती है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा। देन सेकंड इज द टर्म टू मैच्योरिटी, कितने साल का ये बॉन्ड है। कूपन रेट कितना इस पे, वी आर जनरेटिंग द प्रॉफिट ऑन दैट। एंड द लास्ट यील्ड टू मैच्योरिटी हो, उसमें उसमें दोनों चीजें रखी जाती है, कूपन रेट भी होता है एंड द will be as a part of the, जैसे हमने प्राइसिंग की थी तो वहां पे यील्ड को। थ्री सोर्सेस, रिटर्न की जब सोर्सेस की बात करते हैं बॉन्ड्स की, तो 3 सोर्सेस हैं जहां से आता है। वन इज कॉल्ड द कूपन एंड द प्रिंसिपल पेमेंट। सेकेंड इज कॉल्ड इंटरेस्ट अर्न ऑन अ कूपन पेमेंट दैट आर री इन्वेस्टेड करना। और तीसरा यानी कैपिटल गेन एंड लॉस मिलना, उसको भी प्रायर टू मेच्योरिटी देखना। ये सोर्सेज हैं रिटर्न। टोटल रिटर्न कैसे मेजर किया जाए किसी भी पोर्टफोलियो को, एक तो तरीका है, हमने बात की वाइटिंग फील्ड टू मेजर। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इनकम, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको री इन्वेस्टमेंट करना।
whatever the coupon payment मिल रही है उसका बड़ा इसका लिंक। तीसरा, क्या कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है या डेप्रिसिएशन हो रहा है, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट दैट पार्ट। ड्यूरेशन, कितने दिनों की मैच्योरिटी है, क्रेडिट क्वालिटी कैसी है, कूपन पेमेंट्स कैसी, तो वहां से हम किसी भी बॉन्ड को जो है टोटल रिटर्न में डिवाइड। वैल्यूएशन जब हम बॉन्ड्स की करते हैं तो बॉन्ड्स की वैल्यूएशन के लिए वी नीड टू बी यूजिंग द थ्री। वन इज व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कैश। अब ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज क्या है कि जब मेरे कूपन्स की क्या क्या पेमेंट्स आएंगी इन द फ्यूचर। सेकंड, एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, क्या मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है इतने टाइम पीरियड के लिए, तो हम उसी इंटरेस्ट रेट को यूज करें या वैग को यूज करें, तो वहां पे हमारे पास। तीसरा, इनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए, इन सबको वी आर डूइंग अ सम अप, देन हाउ मच वैल्यू, उस वैल्यूज को जो है वो हम आइडेंटिफाई करें। बॉन्ड्स में जो हम बात कर रहे होते हैं तो वी हैव अब बुलेट स्ट्रक्चर ज्यादातर हमारे पास यूज होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आखिर में मैच्योरिटी में वापस होगी, बट उसके साथ कुछ ना कुछ कूपन पेमेंट्स भी आपको दी जाए। सो इसको प्लेन वलीना का भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स और बॉन्ड्स कूपन, और आखिर में जो मैच्योरिटी की पेमेंट होती है उसको वैल्यू पेमेंट का नाम दिया जाता है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक, कुछ एनी क्यूरीज? इज इट ओके, क्लियर है? I'm trying my level best to keep simple. अगर कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, anyone has, please ask freely. Yeah. Thank you, sir. We will have these question answer sessions at the end. So Okay, sure. we don't want to disturb the flow of the session. So kindly Sure. proceed. We will give a time at the end. Thank you. Okay. So when we do a bond valuation, we have to know about the future cash flows. For the future cash flows, we have to identify the four variables we have discussed: the number of years the bond is, the rate the coupon has, and what is the face value, and the what is the required rate of return in a particular time period. So we have calculated its present value, or we call it a fundamental value, or an intrinsic value. So we have to do a discount of these all the cash flows and find out the present value of today, and we compare it with the market value, and then can identify are we generating any finding any arbitrage opportunity. If yes, then there is a good opportunity. Is it our bonds is trading at overvalued or undervalued? So I'm not discussing about that in the uh, 1 hour webinar about these, but these are the valuation method we can use it, and we have. So we have to do a two calculation in the whenever we are doing a trading in the bonds. One is called the current yield, how much return we are generating, annual income, how much the return, how much the coupon profit is. So that is known as the current yield. Current yield is known as the annual cash payment, interest payment, and divide by the whatever the bond price is. So divide that, then we find out the current yield of that bonds. Secondly, whenever we are discussing about the bonds, we have the three types of bonds. So we have three types of bonds. One is called a premium bond, one is called discount bond, and third one is called a par. Whenever the interest rate or a YTM or the market rate is higher than the coupon, I'm saying again, whenever the market rate is higher than the coupon rate, then the market is trading at discount. Discount means इसकी value 1,000 से कम. Why? Because you are generating a higher return in the investment. So right now it's trading low. In the future time, it is going to be increasing. So वहाँ पे हम इसको देखते. Secondly, we have a premium bond. Premium bond have a lesser market return as compared to
आपके पास coupon. So these bond trade on the premium side, and if they have the both the rate of the market and the coupon are the same, then we call it a similar par bond. So this is I just give you an idea. A 3-year bond. This bond is trading at the premium. आप देखेंगे premium bond क्या हो रहा है, इसकी value गिरती जा रही है and become at reach at 1000. अब ये जो prices गिरी हैं, it shows this bond is facing a capital loss. Then second bond we have a YTM is higher than the coupon rate, and this bond prices are declining and toward moving toward 1000, and that is a mean आपके पास वहाँ पे आ रहा है. ठीक है. So yeah, and the par value is moving on the same path. Why the bond have a relationship? One is a price and yield relationship. The price and they have the inverse relationship. They have. So हमारे अब जब हम bonds की calculations देख रहे होते हैं तो we have to be calculating at two prices of the bond. Mostly आपने जो prices सुनते हैं जब हम calculate करते हैं, we call it a green price, quoted price, or whatever the market is trading on that is a price. Actually वो जो price होती है वो without any accrued interest. Accrued interest वो चीज है कि जब during the coupon payment के दरमियान we have purchased the bond. So what is the price of that? So वो जो different है वो हम उसको share करेंगे. वो जो अगर जो buyer है that has to pay that much amount to the seller because buyer will receive in the future after that interest payment mature. So for that purpose that amount is known as an accrued interest. Accrued interest जब हम clean price में add करते हैं तो we call it a dirty price or a total amount that buyer has to pay. That is a major part. Clean price का dirty price का concept हो रहा है. Now moving forward to the second market that is known as an equity market. Equity market is known as a stock market where the shares of the publicly held company are issued, bought and sold. Right now we have more than 550 companies which are trading at the stock exchange, Pakistan Stock Exchange. They are publicly listed companies. Main instrument जो हमारे पास equity market में होते हैं, they are the common stock, we have a preferred stocks, and we have a exchange traded funds भी आपके पास होते हैं. We have to discuss about the common stock जिनके पास होते हैं. Key function of the stock market में हमारे पास जो हमने पहले भी बात की, capital market में क्या है, capital raise. हम capital raise करते हैं because so that हम इसको utilize कर सकें अपनी operational को expansion की तरफ. Because if any company needed more money, no one is going to lend this company. For that purpose, they need a more capital. उसमें क्या चाहिए? Mixture of investors. चाहे वो bond market हो, चाहे वो stock market हो, they need a mixture of investors. तभी इसमें investors. तो कोई भी product बनानी है, तो वहाँ पे they need a raising. Secondly, investor can easily buy, sell the securities. They can convert into a cash for that purpose के लिए use. तीसरा function जब हम बात करते हैं stock market का price discovery. क्या कंपनी की प्राइस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सप्लाई एंड द डिमांड के हिसाब से देखें कि कितने लोग हैं क्या है. Investment opportunity for the individual or for a corporate. Is it an investment opportunity? Should we enter into that market? इसमें क्या potential है? We have to see the political, we have to see the economical, what is the strength on. So उसके हिसाब से हम इसमें invest. And then we have a ownership or we have a voting rights. हम उनके किसी भी decision में हम अपनी rights को involve कर सकते. So जो हमने बात की सेफ्टी भी है, लिक्विडिटी भी है, इसमें फॉरेन कैपिटल भी आ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें आ सकते हैं, रिस्क एंड स्पेक्यूलेशन भी है. रिस्क ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिटिगेट करना है तो हम डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड में भी, स्टॉक्स में भी, डिफरेंट चीजों में भी कर रहे हैं. स्पेक्यूलेशन क्या है? सट्टा, बैट फ्यूचर मार्केट में हम कर रहे हैं.
तो अगर वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस इज गोइंग टू बी इंक्रीज, हम अच्छा खासा सामान ले लेते हैं और उससे हम अर्निंग करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज यूज के स्पेकुलेशन भी हम इसमें कर सकते हैं, तो वहां पे भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। कैपिटल एलोकेशन डिफरेंट, आपके कंट्रोल्स होती है, फंड्स की मोबिलिटी होती है, तो वहां पे दीज आर द मेजर फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास यूज हो रहे होते हैं फॉर द इक्विटी मार्केट। तो सेकंड, इसमें हमने बात की वोटिंग राइट्स है, इसमें हमारे पास रिटर्न्स आते हैं, कौन से आते हैं, एक कैपिटल गेन आता है एंड सेकंड डिविडेंड इनकम हमारा इनका पार्ट। हायर रिटर्न पोटेंशियल होते हैं, इसमें काफी चीजें आ सकती। मेजरली दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं जो यूज हो रही होती हैं, वो आपके पास इसमें यूज हो रही हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, S&P हो गई, जापानीज की हो गई, हैंगसेंग हो गई, हांगकांग की हो गई, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो गई, ऐसे में लगते पाकिस्तान की जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डेक हो गई। दीज आर द ग्लोबली मार्केट्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में यूज हो रही है। बेनिफिट फॉर द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, एक तो अपनी अगर वेल्थ को ग्रो करना है तो यू हैव टू गो फॉर द स्टॉक मार्केट। इन अ बॉन्ड मार्केट यू हैव अ सिक्योर रिटर्न, मगर वहां पे जंप्स नहीं है, हाई रिटर्न्स नहीं कमा सकते। दूसरा, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई करना है तो दैट इज a गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट सेक्टर्स। अगर हम डिस्कस अबाउट द पाकिस्तान मार्केट, वी हैव अ 36 different sector in a stock exchange, and we have around 550 companies, so you can diversify. तीसरा, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे वी नो द कंफर्मेशन अबाउट दीज कंपनीज आर ग्रोथ स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, और वी कॉल इट जो कंपनी डिविडेंड पे करती हैं, तो उनको हम देखते हैं, तो हम वहां पे पैसिव डिविडेंड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। देन वी हैव ओनरशिप स्टेक भी है, इसकी वजह से हम किसी भी टाइम पे अपनी लिक्विडिटी कर अरेंज कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं, एंड द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए भी ये यूज होता है कि क्या क्या हमारे पास फ्यूचर में पोटेंशियल्स कहाँ है, किधर इनकम आएगी, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट वी यूज फॉर द स्टॉक। यही इक्विटी मार्केट आपकी फाइनेंसिंग के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। अब फाइनेंसिंग क्या है, ये अब आप क्या कर रहे हो, कंपनीज को, इंडिविजुअल को आप अपनी कंपनीज का पार्टनर बना, तो फॉर दैट पर्पज वी आर। ज्यादातर फाइनेंसिंग क्यों की जाती है स्टॉक्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स, इक्विपमेंट, R&D के लिए ह्यूज खर्चा चाहिए, या कंपनीज आर मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जोग्राफिकल एरियाज में चेंज आ रहा है, तो वहां पे कोशिश की जाती है कि कंट्री जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जाती है, फॉर दैट पर्पज इक्विटी की सर्विस। इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो वी हैव अ डिफरेंट इक्विटी वैल्यूएशन मेथड। सो इक्विटी वैल्यूएशन में मैं पहले आता हूँ तो एक सिंपल आइडिया समझा देता हूँ। एक वैल्यूएशन होती है जिसको हम कहलाते हैं, we call it a technical analysis. Technical analysis focus होती है whatever the information, prices information we have, the historical, उससे we are going to predict for the future trend, that is known as a technical analysis. Fundamental में क्या होता है, we have to input the expectation, what is going to happen, ऐसी क्या ऐसी चीजें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, क्या आएगी। तो फॉर दैट पर्पज वी नीड जो है वो हम फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का जो फोकस होता है कि फ्यूचर इनकम्स को एक्सपेक्टेशन होता है, जिसमें हम कहते हैं कि फ्यूचर में कंपनी का डिविडेंड कितना आएगा, फ्यूचर में इसकी सेल्स कितनी होगी, क्या होगी, तो उसके हिसाब से हम यूज करते हैं फंडामेंटल। और थर्ड एनालिसिस भी जो अब दुनिया में यूज हो रही है, दैट इज मूविंग टुवर्ड बिहेवियर फाइनेंस या बिहेवियर एनालिसिस। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं दुनिया की, दे इनपुटिंग देयर इंफॉर्मेशन और दे आर सेइंग एनीथिंग ऑन ट्विटर अकाउंट और एनी सोशल मीडिया अकाउंट, सो दैट मार्केट रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली। तो उसकी मार्केट्स में कितना रिएक्ट कर रहा होता है उस पर डिपेंड कर रहा है।
So we have a different valuation method. One is called the discounted cash flow method. मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से method use होते हैं. We have a comparable company analysis. दो companies को आपस में compare किया जाए. Comparable transaction method भी use होता है. Asset based valuation method we have पाकिस्तान में कम use होता है. Sum of parts valuation method और risk adjusted. अगर आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है उसके एक्सपेक्टेशंस उसकी एनपीवी कैलकुलेट करके उससे भी हम देख लेते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट या नई प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो वहां पे भी यूज है. अब कौन कौन से मेथड है उसको बताता हूँ. डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज आल्सो नोन एज अ प्रेजेंट वैल्यू मॉडल. इसमें हमारे पास दो मेजर मॉडल यूज होते हैं. वन इज कॉल्ड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, अनदर इज कॉल्ड द एफसीएफ फ्री कैश फ्लो मॉडल. ये दोनों मॉडल जो है एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज को देखते हुए उनकी प्रेजेंट वैल्यू को आइडेंटिफाई. दूसरा मेथड जो है वो अगर हम कंपैरिजन में जाएं या उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर मॉडल्स. मल्टीप्लायर मॉडल्स में जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से दो मॉडल्स ज्यादा यूज होते हैं बट वी हैव टू मोर. वन इज कॉल्ड द प्राइस टू अर्निंग रेशियो. मार्केट प्राइस को अर्निंग से डिवाइड किया जाए या एंटरप्राइज वैल्यू divided by EBITDA, earning before interest, test, depreciation and amortization. ये मेथड को हम कंपेयर करते हैं उससे भी कंपेयर करके हम अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं. तीसरा मेथड है दैट इज नोन एज एसेट वैल्यूएशन मेथड. नेट एसेट वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास यूज हो रहा होता है दैट इज नोन एज एसेट वैल्यूएशन. फोर्थ मेथड है दैट इज बहुत अब कम यूज होता है रिम मेथड दैट इज नोन एज रेसिडुअल इनकम मॉडल. ये ज्यादातर फोकस करता है बुक वैल्यू के मॉडल्स पे. उन पे इनका जो है वो फोकस हो रहा होता है. सो दैट हमारे पास अब इन मॉडल्स को अलग अलग अगर हम देखें कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा एफसीएफ जो है वो ज्यादातर उस वक्त फर्म्स में यूज होता है जो फर्म डिविडेंड नहीं देती. वहां पे भी यूज प्रोवाइडिंग वैल्यूएशन वैल्यू स्टॉक्स में जहाँ यूज हो रहा होता है वहां पे ज्यादा हो रहा होता है. एंड जो ग्रोइंग फर्म्स होती हैं उन कंपनीज पे हमारे पास ज्यादा यूज. ठीक है जी. सेकेंड डीडीएम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जहाँ पे स्टेबल और डिविडेंड पेइंग फर्म्स होती हैं वहां पे ये यूज होता है. मल्टीपल्स जो है कोई पीयर कंपैरिजन होता है किसी कंपनी के साथ किसी स्टॉक के साथ अगर आपको कंपेयर करना है तो वहां पे यूज हो रहा होता है. एसिड बेस्ड मॉडल एसिड रिच या लिक्विडेशन गुडविल की प्राइसिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड बेस्ड मॉडल को यूज किया जाता है. एंड रिम इज मोस्टली यूज फॉर द रिलायबल अकाउंटिंग इनकम आउट. तो वहां पे इस मेथड को हम यूज कर रहे होते हैं. तो जब हम इक्विटी देखी सब कुछ चीजें देखी तो एक एंड पे आता हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड इनकम एंड द इक्विटी मार्केट में क्या डिफरेंस. सो अगर हम पहली चीज देखें कि हम किस कैटेगरी के लोग. इफ वी आर अ रिस्क अवर्स तो वी प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड इनकम मार्केट बॉन्ड मार्केट बिकॉज रिस्क जो है वो लोअर है फॉर द फिक्स्ड इनकम मार्केट but equity market have a higher. So we have to identify are we a risk averse or we are a risk taker. So if we are risk taker, we may go for the equity market, stock market. अगर हम नहीं है तो हम फिर फिक्स इनकम मार्केट में ही जाएंगे. रिटर्न टाइप क्या है. इनकम फिक्स इनकम की बॉन्ड्स की जो इनकम होती है वो ज्यादातर कूपन होती है. इक्विटी मार्केट में दो तरह के रिटर्न्स होते हैं. वन इज कॉल्ड द डिविडेंड इनकम and another is called the capital gain. Prices में चेंज आ रही है. हमारे कंपनीज जो होती हैं हमारे यहाँ we have a two different types of companies. One is called the अगर the companies are generating more prices so that we call it the capital gain or value stocks. और वो कंपनीज जो डिविडेंड ज्यादा देती हैं कंफर्म डिविडेंड देती हैं they are focus on the डिविडेंड yields को ज्यादा फोकस कर रही हैं. तीसरी चीज ओनरशिप का डिफरेंस है. ओनरशिप क्या है. फिक्स इनकम में ओनरशिप नहीं है. कंपनी हैज टू पे द ओनर कैसे भी करके देना है. अदरवाइज जो आप कभी कभार
You see in the movies, we call it ऑप्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है, तो वो उसी में होती है कि द पर्सन इज नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट अमाउंट और द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर दैट पर्पस। तो इसीलिए फिक्स इनकम में उसकी ओनरशिप तो नहीं होती, तो इसको लॉस नहीं हो सकता, इसका जो भी रिटर्न है उसको देना ही देना है। इक्विटी मार्केट इज एक्चुअली ओनरशिप है, इसमें पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है। वॉलेटिलिटी की बात करें, वॉलेटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो दैट इज वी कॉल इट डिफरेंशिएट जो हो रहा है मार्केट के हिसाब से इफेक्टिव हो रहा है, तो देन वी कॉल इट अ वोलेटिलिटी। बॉन्ड्स की ज्यादातर लो होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा, कंफर्म है, तो इस वजह से। बट इक्विटी मार्केट इज हाई रिस्क मार्केट होते हैं, उसमें अगर आपने रिसेंटली लास्ट वीक भी देखा हो, मार्केट अच्छा भी रिएक्ट करे, कोई इंटरनेशनल वाकया हो जाए, फॉर दैट पर्पज आपकी इक्विटी मार्केट को नीचे जाना पड़ता है। फॉर दैट पर्पज एक एक थोड़ी सी होती है, दैट इज नोन एज बीटा, टू नो अबाउट दैट कंपनीज बीटा के मार्केट का और स्टॉक मार्केट का या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इस कंपनी के साथ आपस में क्या रिलेशन। So you can get in a, so the beta is known as the sensitivitiness between the company and the exchange. Then we have a duration. Stock market में duration नहीं होता because it's a going concern, it's a forever का focus होता है। Bonds में कोई ना कोई maturity होती है, 2 साल का, 5 साल का, 4 साल का, तो वहाँ पे एक define। And the last income जो है bonds की predictable होती है, और जो आपके पास इक्विटी में वहां पे प्रिडिक्टेबल नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, अप एंड डाउन वहां पे आ सकती। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आई कवर द स्टॉक, इक्विटी एंड कैपिटल मार्केट, so that anything, any query, any question, so according to the time I have. Do you have any question you can ask? I am going to answer them. So anyone, any question? I think Assalamualaikum, sir. Madiha Rubab again here. Sir, I have one question. Sir, the question was, can you show us how you compute duration according to various time buckets, different time buckets? sorry, can you repeat the question? How do we compute duration Okay. according we to have different? We don't use war and BAM, weighted average risk and weighted average maturity. Yeah. So what else? How do we compute? Can you just give me a glimpse of it, some little bit idea about it? जब ड्यूरेशन का यूज करते हैं, so for Yes, the sir. short term period bonds, so we use the simple duration, effective duration concept. But if there is a longer maturity bonds, then we use the pricing method, when that is a combination of the duration and the convexity. कि इनका आपस में combination के price की movement की वजह से how much is going to be an impact. So if interest rate is moving changes in according to basis point, so how much my portfolio value is going to be a downward or going to be upward, how much I will bear the loss, is it in the threshold level I am, or I am crossing my threshold level. So फिर उसी को हम जो कैलकुलेट करते हैं, फिर वॉर के थ्रू लिंक करते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज हम जा रहे हैं. So is it 99% पे जा रहे हैं या 95%, that according to the companies and the banks की होती है, तो वो उस हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करते हैं. If we are using a high, if we are using a high risky bond, then we have to go for a use for the more volatility bonds. Right now, if you heard about that, USA bonds is becoming a high volatility in the current situation. Yes. Yeah, interest rate is increasing day by day. As soon as the Trump is saying something about tariff, the market is increasing about it.
So that is a major. तो फिर उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि कहाँ पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है. So we use a duration, effective duration और the convexity combine करके हम इसको use कर रहे होते हैं. वहाँ पे इसको calculate कर रहे होते हैं. Yes. Okay. Next, we have a question from Mr. Raza Naqvi. Raza, Foreign please trade ask your question, or otherwise you can type it. Foreign trade officer का question. Yes, Jawad Hashmi, a foreign trade officer, you can ask. Thank you very much. This is Jawad. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, you are. Sir, quick question. Thank you very much. It was very informative, and especially the comparison between the various asset classes. We understand that all the equities are traded at the stock exchange on a daily basis, on a real-time basis. We get the prices. How does an investor trade in the bonds market on a real-time basis? How does that happen? Is there any market for the fixed income bonds trading here where the investor can approach, get the price, and trade? Thank you. Nice question. Basically, when we are trading in the stock market or in the bond market, internationally or locally, we have two different markets. One is called the exchange market, another is called the OTC market, over the counter. Over the counter market में क्या होता है कि we have a brokerage house involved in between the negotiation between the trading transaction. Even we have a money market, भी OTC में चलती है, FX भी also work in OTC market. So for that purpose, we have a limited bonds in the exchange company. And वो वहाँ पे इतने trades भी नहीं होते, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया भर हो. Mostly the bonds or these type of market OTC. So for that purpose, you may get the real time जो pricing है वो आपको एक तो broker से मिल सकती है कि क्या. And secondly, if you want to know about the government securities bonds prices, for that हमारे पास एक आ रही होती है गुफा की वेबसाइट है पाकिस्तान में जिसपे आपके पास आती है पाकिस्तान रिवैल्यूएशन रेट PKR. उस रिवैल्यूएशन रेट से you can identify कि आज की बॉन्ड की क्या प्राइस. The second strategy अगर you want to know कि इस bonds की 5 years की 10 years bond की what is the price. Second. Third, if you move on स्टेट बैंक की वेबसाइट होती है, अब वहां पे आती है कि आज कौन कौन से बॉन्ड्स की बाइंग सेलिंग्स हुई है, किस प्राइस रेंज के अंदर. तो यू मे फाइंड फ्रॉम देयर कि 5 इयर्स का बॉन्ड किस रेंज में ट्रेड हुआ है, 10 इयर्स का बॉन्ड किस रेंज में ट्रेड हुआ है. तो दैट इज द थर्ड वे यू कैन फाइंड द प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड्स. Any more questions? Kindly raise your hand if you have any more questions, please. Okay, sir. Now I'm closing the session. On behalf of Al-Sadiq Institute and all the participants, I would like to express my heartfelt gratitude to Mr. Faisal Sarwar for sharing his valuable time, expertise, and embellish this webinar with his practical knowledge. We also extend our thanks to all attendees for their active participation and thoughtful questions. We hope that this session added value to your professional journey. Stay connected with us for future regarding our future programs focused on the evolving landscape of Islamic banking and finance. Stay connected with our social media handles and you will receive email as well. You also know that this is a recorded session and it will be available on social media. Thank you. Until next time, Allah Hafiz and take care.